Yeah, ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation. The last league game of the HBL PSL 10, and it was box office. Box office from the home side, Islamabad United winning the contest against Karachi Kings by 79 runs. Plenty of awards, so let's start with the presentation party, starting with Ms. Iraj Hassan, Assistant Manager Social Media PSL, Mr. Muhammad Ali, Senior Representative and Head Strategic Projects HBL, Mr. Malik Waqas Ali Khan, Head of Business Support North Jazz, Ms. Harim Farooq on behalf of Exchange On, Mr. Syed Khubaib Ali, Authorized Dealer of Inverex Solar Energy, Mr. Muhammad Awais Kaisar on behalf of Homage Appliances, Mr. Abdullah Hafiz Khan on behalf of Go Lutlo, and the hero tonight, Mr. Waqar Ali, High Altitude Mountain Guide as part of the Homage Appliances. Now the first award, can I please request Mr. Abdullah Hafiz Khan to come and present the Go Lutlo Scan Karo Ji Motorbike Award. Every match, a player, a participant, a fan gets an award in a form of a motorbike, and the lucky winner is Muhammad Asghar Gujjar. Mr. Waqar Ali, a top mountaineer from Shimshal Hunza, has led daring rescues and conquered the K2, the Nanga Parbat and the Broad Peak. Known for his rope fixing expertise, his courage and teamwork inspire climbers all across Pakistan. And can I please request Mr. Muhammad Awais Kaisar to present the Hamare Heroes powered by Homage Appliances cash award of 2,40,000 rupees to Mr. Waqar Ali. Great initiative by the PCB and the HBL PSL to celebrate all our heroes. Moving on, Ms. Iraj Hassan will now present the PCB Moment of the Match trophy to Imad Wasim to get rid of the opposition skipper who would come out all guns blazing. Great delivery from Imad. Next award, Ms. Harim Farooq will now present the Exchange On Catch of the Match cash award of 200,000 Salman Ali Agha. Something about Rawalpindi and the sky is not going to hand, Salman Ali Agha making no mistake to dismiss James Vince. Next, can I please ask Mr. Syed Khubaib Ali to come forward and present the Inverex Solar Energy Energetic Batter of the Match cash award, 200,000. At the top of the order, Saibzada Farhan, 73 of 41. It was raining fours and sixes, 3 sixes, 9 fours, and a great partnership with Alex Hales. Next award, Mr. Syed Khubaib Ali will now present the Inverex Solar Energy Hanif Mohammad Cap. Can I please ask Saibzada Farhan to come back, as he is now, so far, the leading run scorer for the HBL PSL 10, 394. Mr. Malik Waqas Ali Khan will now present the Jazz Superpower of the Day cash award, 300,000 to Alex Hales. He was at the other end with Saibzada Farhan. He got 88 of just 35, 8 sixes, 6 fours, and struck it at 251. Now the HBL, celebrating a decade of the HBL PSL with Zabardast Khel. Joining us today to present the Player of the Match trophy and cash award is Mr. Muhammad Ali, Senior Representative and Head Strategic Projects HBL. He's going to now come forward and present the HBL PSL Player of the Match trophy and cash award, 500,000 once again, Alex Hales. 88, huge partnership, 153 with Saibzada Farhan, and a crucial one to secure the second spot in the qualification playoff table. Alex, this way. That's all right. Now that's one way to start, fresh off the plane, and a firefighting 88. It was box office to watch. Thank you. Yeah, it's one of the best places in the world to bat here at Pindi. So, yeah, nice to come off the plane and put in a big performance in a game that was really important for the franchise. Now, in terms of, obviously, qualification was an important game because you want 2 bites at the cherry. How important was it, and what did you make of Saibzada Farhan at the other end? Yeah, definitely. It was a really, really big game. As you said, you want 2 cracks at making the final, and I thought my opening partner was very impressive. We put the pressure on them from ball 1 and made them go to their variations, and I think that made it easy for us to score throughout the innings. So, yeah, real happy with that partnership and putting on a big score. The big score was important because there's one ground where teams can chase anything down. It is Rawalpindi. Did you have 250 in mind, or was it assessing as you went along?
Yeah, I think it was assessing. We know we needed more than 200. I mean, I think we had to win by 49 runs, I think. So I think for them, they're probably easy going to get 150. So we probably knew we needed at least 220. So getting off to that start in the power play really set the foundations nicely. You've got a long-term relationship with Islamabad United. You already said on social media, nice to be back. Yeah, it is nice to be back. It's a franchise I've got great memories with. Managed to win a few PSLs with them, so really happy to be back at the business end of the tournament. Yeah, great watching tonight go well for the playoffs. Thanks very much. Right then, can I please ask the skipper of the Islamabad United side, Shadab Khan, bagged 4 wickets tonight, and well, he was in a fair fight for the player of the match. बेहतरीन परफॉर्मेंस, 4 मैचेस लाहौर में हारते हुए आए, बहुत सारे निगल्स को भी नर्स किया, बट इस किस्म का स्टार्ट खास करके प्लेऑफ्स पे और वो नंबर 2 स्पॉट इन द टेबल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं. ऑब्वियसली जो चीज़ भी होती है उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है. ऑब्वियसली जब हम पहले 5 मैच जीते उसके बाद ब्रेक मिला और हम मोमेंटम लूज़ किया, और अभी 4 मैचेस हारने के बाद दोबारा ब्रेक मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्टार्ट हुआ. होपफुली ये मोमेंटम हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप कैरी करेंगे. मोमेंटम बड़ा ज़रूरी था क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह के चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में करने पड़े, तो बहुत ज़रूरी था कि जो नए प्लेयर्स आए वो तो परफॉर्म करें, बट जो कोर ग्रुप है उसका बैटिंग करना. तो 251 साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स की बड़ी पार्टनरशिप की बदौलत. डेफिनेटली देखिए, जिस तरह के साहिबजादा का थ्रू आउट द ईयर जिस तरह वो खेल रहा है, आउटस्टैंडिंग. कुछ ऐसी चीज़ें थी वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है कि 3-4 मैचेस में, लेकिन ब्रेक की वजह से उसने रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप अच्छी फॉर्म में भी होते हो अपनी इनिंग्स को रिफ्लेक्ट करें कि आप क्या अच्छी चीज़ें कर रहे थे पहले और क्या आप एक्स्ट्रा कर रहे. तो मुझे लगता है कि उसने जिस तरह के रिफ्लेक्ट किया और आज जिस तरह के प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से उसने स्टार्ट किया, और क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है, तो वो बहुत अच्छा साइन है. और एलेक्स वी नो के हमारे पास तो काफ़ी अरसे से खेल रहा है और दुनिया में भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है. जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस है और जिस तरह आते साथ ही उसने स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए. तो अगले मैच के लिए भी यहाँ से सीधा जहाज़ से ग्राउंड में ही भेजें एलेक्स हेल्स को. शेड्यूल ही ऐसा, कल जाकर फिर परसों मैच है, तो अभी तो हम खुद बूढ़े हो गए सारे, तो अभी तो बॉडियाँ अपने सो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे अच्छी रिकवरी हो. ये बताएं, मैच को 2 साइड्स में डिवाइड करें तो रन्स तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 230 के करीब तो पार स्कोर यहाँ है, 250 अच्छा स्कोर लगा, बट एलेक्स से पे मैंने पूछा यहाँ अगर चेस हो सकता है तो बॉलिंग यूनिट का परफॉर्म करना कितना ज़रूरी था. आप स्पिनर्स, तीनों स्पिनर्स के बीच में 7 विकेटें, इनफैक्ट खुद आपने 4 विकेट ली, वो कितना इंपॉर्टेंट था? देखिए, जब मैं बैटिंग भी करने गया या आगा ने जिस तरह बैटिंग की, तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें होल्ड होगा और ग्रिप मिलेगा, क्योंकि जब आपका इतना टोटल लगा होता है, तो अगर आप 2-3 अच्छे ओवर करते हैं और अगर आपको पिच से भी थोड़ी सी हेल्प मिल रही है जहां होल्ड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे एरिया में अगर आप हिट करते रहते हो, तो T20 क्रिकेट में ऐसी है कि क्योंकि तेज़ रन्स करने के चक्कर में आपको विकेट मिल सकती है, और अगर आप विकेट लेते हैं तो ओबियसली दूसरी टीम पे प्रेशर आता है. चलें, फैंटास्टिक विन, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्लेऑफ्स. जाते जाते एलेक्स हेल्स का इनाम लेते हुए चले जाएं. And that's all we have from down here. Yeah, fantastic performance by Shadab and his men. So that's the standings, and this HBL PSL caravan now moves to Lahore. It's now a never say die kind of a situation now for all the top 4 teams, and a lot to look forward to. The first contest between Quetta Gladiators and Islamabad United, and then the big one. It's the eliminator, Karachi Kings versus their arch rivals Lahore Qalandars. Qalandars will be playing at home in front of possibly a full house. Then qualifier loser, and then the big final on May 25th. Right, that's the qualifier. Then on May 21st, we'll be live with all the action at 7:20 p.m. local time, live from the great city of Lahore. Till we meet again then, it's goodbye and good night from here from Rawalpindi.